Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the course of Art of Leadership and Motivation, HRM 760. Today is lecture number 26 and I am your facilitator, Professor Dr. Muhammad Majid Mahmood. Today our topic of discussion is Leaders' Key Responsibility, Human Resource Retention. Now when we talk about the key responsibilities of leaders, of course, it is the major responsibility of any ideal leader to make his or her followers loyal with the organization. And of course, the purpose is employee retention. Because if you are unable to retain your employees in the organization, then you are not, going to beat your competitors. So employee retention is the key for success. For instance, if employees, if people, they join your organization and then they leave your organization, so then of course you are losing your most important resource. Because if people come and get training, get experience and then leave your organization and join your competitor, I think इससे बड़ा loss हो नहीं सकता. So in order to remain in the market and in order to compete and beat your competitors, it is really very important that you must retain your best human resources. And of course, leaders have a very important role here to play. Now, first let us talk about the ethical issue. There are numerous negative organizational consequences to firing employees, including the discomfort of the supervisor who delivers the termination information, conflict or sabotage from the departing employee, and the potential for a lawsuit. So definitely when you terminate your employees, when you fire your employees, when you separate your employees from the organization, so it is not only the employee who suffers, it is the organization that suffers as well. Like for example, most important thing is employee is not happy. So there is a chance that there will be a negative conflict. On the other side, there is a potential for a lawsuit from the departing employee. On the other side, the supervisor who delivers this termination information to the concerned employee really feels discomfort. In response, many supervisors provide problem employees unpleasant work tasks, reduced working hours, or otherwise negatively modifying their jobs in hopes that the problem employees will simply quit. Now, these are some other tactics. And the supervisors, they are creating a pressure, a high stress level on the employees, so that before organization unko फारिग करे, or employees they leave themselves. Like for example, कि employees को ऐसा काम देना जो कि उसको सख्त नापसंद है, उसके working hours को reduce करना, meaning that कि जब employee के working hours को आप reduce करेंगे तो employee को salary भी कम मिलेगी, या कुछ इस तरह की उसको जॉब असाइनमेंट देना जो कि उसके लिए डिस्कम्फर्ट का बाइस हो, तो उसका फिर एक नतीजा ये भी होता है कि एम्प्लॉइज जो हैं वो सिंपली दे क्विट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हाट आर द एथिकल इश्यूज रेज्ड बाय दिस strategy? Of course, there are so many ethical issues. Like number one ethical issue is, like it is totally unethical, it is immoral that you are forcing your employees to leave the organization without their consent. Like
one way or the other you pressurize your employees with unethical practices. And your purpose is that the employee leave the organization. So when employees they quit, of course those employees are in high discomfort when they quit. So what happens that when those employees they quit, they tell everybody outside the organization that this organization is not fit for employment. So you damage your market repute. People think negative about you. So there are rumors and there are propaganda, and maybe if the media is involved, then this thing can multiply. So our assets walk out of the door each evening. We have to make sure that they come back the next morning. So now you see that it is our asset. The most important asset leaves the organization, and how we ensure that he or she comes back. So this is a major challenge faced by today's leaders. Now talking about the HR critical findings, 1 out of every 3 people plan on leaving in the next 2 years, according to Hay Group USA. Now this is a very interesting and tragic finding. हर 3 में से 1 पर्सन जो है वो नेक्स्ट 2 years में ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने का सोच रहा है, according to a Hay Group survey in USA. Situation is not like favorable for those employees when they plan to leave. It means that we must do something in order to retain our employees. So what are the root causes? Why employees are unhappy with the organization? Why employees are planning to leave the organization? Now what are the symptoms and what are the root causes? It is the major responsibility of good leaders to understand the symptoms and root causes of the problem that why employees leave an organization. Now the symptoms are: employees show regular discomfort, unhappy with his or her role in the organization, talking to his or her fellows about the discomfort in the organization, complaining, blaming others, and talking sometime about violence. And sometimes these people also talk about taking revenge from the organization. So now you see that these are the symptoms. Now what are the root causes? The root causes of the problem are employees, what they want. They are giving time, they are giving their energy. They are doing everything for the organization. And what they want in return from the organization? They want financial and non-financial rewards. So, how to retain employees? The answer lies in providing them financial and non-financial rewards. Like for example, if one employee is not getting promotion, like since long time, even his or her performance is excellent, he is doing the best job, but even then he or she is not getting promotion. So what will happen to that employee? That the attitude or motivation level of the employee will decline. The employee will develop negative attitude in most cases, and that results in leaving the organization. So financial and non-financial rewards include, firstly we talk about the financial rewards. The money, the capital, जो सैलरीज हैं एम्प्लॉइज की, जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स ले रहे हैं वो, दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स.
Non-financial rewards means training and development, appreciation certificates, compliments, some gold medal or like appreciation certificate. So people, when they are given pay for performance, they become loyal with the organization. But when there is no pay for performance, when there is personal liking or disliking, when the average performers are getting more rewards and excellent performers are not getting rewards, of course, this is called discrimination. So as a result of discrimination, people leave an organization. Now, according to research, it costs much more to replace employee than to keep them. अगर आप नया एम्प्लॉई हायर करते हैं, कॉस्ट इज मच हायर देन कि जो आप एम्प्लॉय को कीप करते हैं. तो एम्प्लॉय को कीप करने की कॉस्ट कम है और एम्प्लॉय को हायर करने की कॉस्ट ज्यादा है. सो व्हाट इज द लर्निंग हियर? द बेसिक लर्निंग इज we need to focus on the existing employees. Now, जैसे हम मार्केटिंग में बात करते हैं about CRM, customer relationship management. So same is the case here, that we are focusing on more on building and strengthening the relationship with the employee. Because once we develop strong relations with our employee, he or she becomes loyal, and loyal employees in most cases, they remain with us. They do not leave our organization. On the other side, if you keep on hiring new people and your old employees, they keep on leaving, maybe due to unemployment, you will get like quickly new employees in Pakistan. But what about their training cost? That is too much high. So after every few months or after every few years, some employees leave, and after they leave, do you hire new employees? So you will lack a most experienced employees. One thing. Secondly, when you hire new employees, you need to give them orientation sessions, you need to give them basic trainings and then advanced trainings. आप basic training दे रहे हैं, advanced training दे रहे हैं, but everybody is leaving, or most of them are leaving after getting certain experience. That is really bad for the organization. So that training cost is also included when you hire new employees. So it is highly recommended that you need to do something good with the existing employees so that they do not leave. Now, talking about the challenges facing organizations at present, the first challenge organization face today is called worker shortage. There is a shortage of workers. Now here we are talking about the most competent human resources. Like, you need skilled workforce. You need most competent human resources. But there is always a shortage of most competent, most skilled persons in the market. So in most cases, there is a shortage of competent people, and particularly most experienced people. There is a shortage in the market. So in case of shortage, it is a big challenge to the organizations, because if the existing employees are leaving and there is already shortage of most competent employees in the market, the organization is in big, there is a big challenge
faced by that organization. Skill shortage. Employees are available, people are available, but the skills we need to run our organization most efficiently and most effectively, that skill is missing in most cases. So there is a shortage of required skills in the market. Talent management issue is always there. Like, for example, how to manage the talent. And then generational differences. Of course, new generation, old generation. So when you are hiring new employees, and normally those new employees are the young people. So when you hire young employees, on the other side, the existing employees are old in age. So when both the generations sit together, work together, there are major challenges faced by organizations these days. Global competition. Day by day, competition is increasing in the world. Now, there are almost no more monopolies in the world. So in order to beat the competitors in global competition, one leader should have a global mindset. A global mindset means that you should have strong grip on market. Whatever is going on in Pakistani market and whatever is going on in abroad, you should have a very close eye on it. And then diversity. Of course, there is high diversity. Like people from different cultures, different religions, different values, different attitudes with different behaviors, male and female, working together in the same organization. That is a big challenge to the existing leaders these days in the organizations. And finally, loyalty issues are there. Because the major responsibility of any good leader is to make his or her followers loyal with the organization. But creating and maintaining loyalty of employees with the organization is not an easy job to do. Now, talking about employee retention, what it is. Employee retention is a process in which the employees are encouraged to remain with the organization for the maximum period of time or until the completion of the project. Now, this is one of the most simplest definition of employee retention. Like employees, उनको motivate किया जाता है कि वो organization के साथ maximum time तक रहें. Now, maximum time means that until their retirement. और जब तक के project complete नहीं हो जाता जिसमें वो काम कर रहे हैं. This is what is called employee retention. Employee retention is beneficial for the organization as well as for the employee. Now let us discuss that how employee retention is beneficial to the organization first. Organization के लिए इसलिए beneficial है कि organizations, they have the most experienced people with them. So people who are experienced and who have the same experience of the same organization, they are better decision makers. They are better able to manage any issues, any problem in the organization. And they know very well that what to do and when to do and how to do. On the other side, if we want to increase the efficiency and effectiveness of an organization, of course the existing employees has a key role in it. Because they know the rules and regulations. They know the structure. They know that how to influence other people, how to motivate other people. And the most important thing is existing employees, they have a strong relation with each other. So when we know each other since long in our organization, so we are
we become highly cooperative. We have more cooperation, more coordination among the employees in case of existing employees or old employees. On the other side, there are certain benefits for the employees as well. For example, they feel more comfortable in the office. They are happy. So they have a peace of mind because they understand each other's strengths and weaknesses. And they have no problem with each other in most of the cases. Now, defining human resource retention further, the extent to which an employee is committed to their work and their organization, and the extent to which this commitment impacts their performance and intent to stay with the organization. Now, talking about the extent, we means that the level कि एम्प्लॉई की कमिटमेंट का जो लेवल है उनके काम के साथ, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो कितना है ना। जितना ज्यादा आपकी कमिटमेंट और आपका एक इन्वॉल्वमेंट होगी रिलेशनशिप की ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उतना ही आपका उसका इम्पैक्ट होगा आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। और जितना ज्यादा आप बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपका एक इंटेंट होगा, आपका इरादा होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में स्टे करने का। नाउ पीपल हु लैक मोटिवेशन और पीपल हु आर पुअर परफॉर्मर्स, पीपल हु हैव लैक ऑफ कमिटमेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, so their chances to leave the organization are much higher than those people who have a strong commitment and motivation towards work and their organizations. A positive attitude held by the employee towards the organization and its value. An engaged employee is aware of business contexts and works with colleagues to improve performance within the job. So what is it? Based on these definitions, human resource retention is the total of the behavior employees espouse in the organization, which primarily should be characterized by belief in the organization. Now, belief in the organization means what? It means that कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कितना यकीन है। आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग बिलीफ होगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे, आप उतना ही चांसेस हैं कि यू रिमेन विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड यू डू नॉट लीव। और जिन लोगों का कमजोर बिलीफ होता है, वीक बिलीफ होता है ऑन देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर मोर चांसेस ऑफ leaving those people from the organization. Drive to work and make things better. लोगों को काम करने का कितना दिल करता है और इंप्रूवमेंट लाने का कितना दिल करता है अपने ऑफिस में। Now this is another very important finding when we talk about HR retention. Like for example, जो लोग जितना उनका एक काम करने का उनका दिल करता है, इंटरेस्ट है, और चीज़ों को बेहतर करने की उनकी जितनी कमिटमेंट है और जितना उनका एक ड्राइव है, दैट शोज देयर रिटेंशन लेवल. रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट फॉर अदर्स. नाउ पीपल हु रियली रिस्पेक्ट अदर्स and people who really support others, they are more loyal with the organization than those people who disrespect other people and those people who do not support others, or some people who create problems for others. So what does it mean? It means that people who do not respect others or who are uncooperative or who do not support their colleagues, they are not happy with the organization. So their chances to leave the organization are much higher. And desire to learn new skills. Now, official responsibilities को most efficiently, most effectively perform करने के लिए आपको new skills सीखनी है
और जो लोग उन न्यू स्किल्स को सीखने में जिनकी डिजायर है, जिनका इंटरेस्ट है, जिनकी मोटिवेशन है, दे आर मोर लॉयल विद द ऑर्गेनाइजेशन। और जो लोग नई स्किल्स नहीं सीखना चाहते इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर वर्क, देयर आर लेस चांसेस कि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टे करें। नाउ रिटेंशन इज कमिटमेंट बेस्ड। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द रैशनल कमिटमेंट। Now, employees believe they will personally benefit financially, developmentally, or professionally from the team or organization. And then it makes sense for them to stay with the organization. Now, employees की एक अकली commitment है, उनकी एक rational commitment है कि उनको एक फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे जब वो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टे करेंगे, उनकी डेवलपमेंट होगी, उनकी स्किल डेवलप होगी, उनकी कैपेसिटी डेवलप होगी, वो उसकी स्किल डेवलप होगी, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी। जब ये उनको बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, दिस गिव देम ए सेंस कि जी वो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टे करें। But on the other side, if the employees are not getting any financial benefits, or if they are not being developed with the passage of time in the organization, उनकी कोई professional development नहीं हो रही, तो what happens that they start thinking about leaving the organization. Now talking further about the rational commitment, it is driven by remuneration. लाइक फॉर एग्जाम्पल कि आपका रिम्यूनरेशन कितना है, आपकी सैलरी कितनी है, आपके पैकेजेस कैसे हैं, आपके इंसेंटिव्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या क्या दे रही है इंसेंटिव्स में, बेनिफिट्स में, कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ देयर आर नो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन कैरियर, तो आपकी सैलरी और इंसेंटिव जितने भी अच्छे हों, पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि जी वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दें। सो कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर मैंडेटरी इफ यू वांट टू कीप योर एम्प्लॉइज, इफ यू वांट टू रिटेन योर एम्प्लॉइज। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में बजट में ही पोजीशन नहीं होती। लाइक फॉर एग्जांपल कि एम्प्लॉइज दे नो कि आगे बजट में ही पोजीशन नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, या फॉर एग्जांपल इतनी ज्यादा लैग पुलिंग है कि देर आर नो चांसेस कि कोई पोस्ट एडवर्टाइज होगी या वो उनको पोस्ट मिल सकेगी, उनकी प्रमोशन हो सकेगी, उनकी न्यू अपॉइंटमेंट हो सकेगी और वो अपने कैरियर को सेम ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी उतने ही ज्यादा चांसेस हैं एम्प्लॉय के ऑर्गेनाइजेशन को लीव करने के, और जितनी ज्यादा कम अनसर्टेनिटी होगी उतने ही ज्यादा चांसेस है कि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसका एक ताल्लुक रहे और वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए। हेल्थ बेनिफिट्स, ऑफ कोर्स देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस जिनके जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वो कंपैरेटिवली बाकी जो उनके मेजर कंपेटिटर्स हैं उनसे बढ़ के। नाउ हेल्थ इज अ बेसिक इशू। Like, it is not only the employee, there are the dependents as well. Like employee के dependents कौन कौन हो सकते हैं? उसका spouse हो सकता है, spouse के साथ साथ बच्चे हैं, and then parents हो सकते हैं, elders हो सकते हैं, बाकी आपके घर में बहन भाई हो सकते हैं जो आपके dependent हैं financially. तो sometimes organizations provide medical benefits to the employee as well as all dependents. So that is a wonderful benefit to employees. So those organizations who have a stronger health benefit system, they are in a better position to keep their employees, retain their employees than those organizations who have poor health benefits or no health benefits. Work environment. Now work environment is really very important. Like for example, in some organization there is supportive work environment
but in some organization there is lack of support. So जिन organization में एक highly supportive work environment है, they perform better than those organizations जिनमें supportive environment नहीं है. तो rational commitment point of view से जब हम बात करते हैं, तो having a positive environment encourages the employees, motivates the employees to stay with the organization. Learning and development opportunities. Some people, they want to stay with the organization if there are any good learning and development opportunities in the organization. अगर learning और development opportunities नहीं हैं, तो फिर क्या होगा? Definitely, employees, they start thinking about leaving the organization because they think that with the passage of time, अगर उनकी learning और development नहीं हो रही, so this will slow their career growth. And finally, most important rational commitment is driven by work-life balance. क्या आपकी वर्क लाइफ है, आपकी होम लाइफ है, क्या उसका बैलेंस है? ये तो नहीं है कि सुबह आप 9 बजे ऑफिस जाते हैं और रात को आप 9-10 बजे आ रहे हैं, तो 12-12, 14-14 घंटे आप ऑफिस में बैठ रहे हैं. If you are unable to give proper time to your families and relatives and friends, so ये सिचुएशन जब काफी अरसे तक चलती है, तो एम्प्लॉइज दे स्टार्ट थिंकिंग कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया जाए जिसकी वजह से उनकी होम लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ, उनकी सोशल लाइफ जो है वो हाईली डिस्टर्ब हो रही है. सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो बैलेंस रखती हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो बैलेंस रखती हैं, एम्प्लॉय की वर्क लाइफ को, एम्प्लॉय की होम लाइफ को आपस में बैलेंस रखती हैं, एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा काम नहीं देती, जो वो ज़्यादा उसको वर्क ओवरलोड नहीं देती, लेट सिटिंग नहीं करवाती, तो कंपैरेटिवली ऐसे एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टे कर जाते हैं. अदरवाइज अगर आप बहुत ज़्यादा वर्क लोड डालेंगे, अगर उसकी सोशल और पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, तो देर आर चांसेस कि एम्प्लॉय में लीव योर ऑर्गेनाइजेशन. Now talking further about retention is commitment based. Talking about emotional commitment. Believing in, valuing or enjoying their day-to-day work, teams, managers or organizations. So when employees जब वो अपनी daily activities को अपने ऑफिस में, अपनी teams को, अपने managers को, अपनी organization को, when they enjoy, when they start giving value, that is called emotional commitment. Because they can make a link between their role and organizational objectives and value system. And they enjoy or find fulfillment in the work. Now this is really very important that we should understand that there is an emotional commitment. Like for example, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इमोशनल कमिटमेंट होती है, तो एम्प्लॉइज दे रिकॉग्नाइज देयर रोल, दे नो दैट हाउ देयर रोल, हाउ देयर पर्सनल रोल लिंक विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड देयर वैल्यू सिस्टम. Now talking further about the emotional commitment is driven by enjoyment of one's job. Of course, एम्प्लॉइज जो हैं वो जब अपनी जॉब को एंजॉय करना शुरू करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड हाई इमोशनल कमिटमेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट हेल्प देम स्टे विद द सेम ऑर्गेनाइजेशन. रोल क्लैरिटी. यू नो दीज डेज पर्टिकुलरली जब हम पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज आर अनक्लियर अबाउट देयर रोल्स. एम्प्लॉइज को ये नहीं पता कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सी उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, कौन सा काम उनका बनता है, कौन सा काम उनका नहीं बनता. तो जितना ज़्यादा आपकी रोल क्लैरिटी होगी ऑर्गेनाइजेशन में, उतने ही चांसेस हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टे करना चाहेंगे. और जितने ज़्यादा आपकी रोल क्लैरिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है, आपका अनक्लियर रोल है, उतने ही कम चांसेस हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टे करने के.
Understanding the link between one's job and organizational strategy. जॉब और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी में जो लिंक है उसको अंडरस्टैंड करना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. Here comes the major responsibility of an ideal leader. कि एक एम्प्लॉय की जो जॉब है और उसकी जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज का ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी के साथ क्या लिंक है. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि मैं अगर अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करूंगा तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी अचीवमेंट पे उसका क्या इंपैक्ट होगा. सो व्हेन एम्प्लॉयज हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट देयर जॉब and its link with the organizational overall strategy, they are more loyal and they are better performers. Believe in organizational values. जो employees organization की values के ऊपर जितना ज़्यादा उनको यकीन है उतनी ज़्यादा उनकी emotional commitment है organization के साथ. और जो लोग organization की values को ignore करते हैं so they have a weak relationship with the organization. Respect in direct manager, team and organization. So people who respect others, particularly their colleagues, juniors, seniors, their managers and teams and overall organization. Emotional commitment drives discretionary effort performance. Now what is that discretionary effort? Now discretionary effort के लिए मैं एक simple सी example देना चाहूँगा कि लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफिस के टाइमिंग्स हैं 9 to 5 PM. सो 9 AM to 5 PM. फॉर एग्जाम्पल 3 बजे 3 PM पे आपका काम कंप्लीट हो जाता है. नाउ व्हाट यू डू फॉर द रिमेनिंग 2 hours, काम तो आपका खत्म हो चुका है. नोबडी इज वॉचिंग यू, सो व्हाट यू विल डू? People who have high emotional commitment towards the organization, they never waste those 2 hours. They start another task, or at least what they can do is they focus on improving their existing responsibility, like improving the work done, because improvement is an ongoing process. So there is always room for improvement. So people who show high emotional commitment towards the organization, there are more chances that they will use their discretionary effort for the performance enhancement. Now talking about the role-based levels of retention, there are 5 work-related roles that an employee can assume, and these roles are, the first one is job holder role. Employees come to work and do the job that is listed in their job description. Very simple. Employee आया, उसने वो काम किया जो उसकी job description में लिखा हुआ था, that's it. Here we call that employees performing only the job holder role. Now the higher level than this is called team member role. Employees go above and beyond to help members of their team work toward common goals. And the next role is called entrepreneur role. Employees come up with new ideas and processes and try to get those ideas implemented. So employee has a unique brain, new ideas. So employee is like becoming more creative and moving towards the innovation side as an entrepreneur role. Career role. Employees do things to enhance their career in organization. They learn, they adopt new skills and more. And finally, organization member role. Employees do things that promote and help the company even if it's not part of their jobs or their team's duties. Now this is really very interesting. And this is
really one of the most important roles here we are talking about, and that is called organization member role. Employees are doing good with the organization. चाहे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है, चाहे उनकी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है, but whenever they feel that, whenever they think that, whenever they observe that, they should play a positive role. They play their role without any expectation of rewards or benefits. Now, have you ever hired the wrong person? So when we talk about employee retention, and when we talk about the key role of leaders in employee retention, so leaders are also those people who are the managing that recruitment and selection procedures. So let us suppose that if you hire a wrong person, so what will happen? The person remains with you for a longer period of time, and that becomes your responsibility that you need to pay salary to that person. So if you keep on hiring the wrong person, there is a high damaging effect on your organization. So why good people quit? Now what comes in your mind? Okay, what comes in your mind when we talk about why good people quit? Okay, some people say that it is the salary issue. Some people say that it is the environment issue. So there are many reasons. So let's look at the various reasons according to research that why good people leave an organization, why good people quit. If there is a poor match between the person and the job, कि जो पर्सन की क्वालिफिकेशन है और जो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो दोनों मैच नहीं कर रही. फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसने फॉर एग्जाम्पल MBA फाइनेंस किया हुआ है और आप उसको लगा देते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव. तो आप मुझे बताएं कि देयर विल बी अ मिसमैच of the person's qualification with the job responsibilities, क्योंकि MBA फाइनेंस उसने किया हुआ है और काम आप उससे करवाना चाह रहे हैं मार्केटिंग का. So there is a mismatch and people quit because they are unable to do the best. Poor fit with the organizational climate and culture. Sometimes the culture of an employee is totally different and the culture in the organization is totally different. So when there is a total contradiction of cultures, like the personal culture is different and the official culture is different, so if there is a poor fit, then the result is good people quit. Poor alignment between pay and performance. Very important, because people believe that there should be pay for performance. But what happens if there is poor alignment between the pay and the performance? आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन सैलरी आपकी नहीं बढ़ रही. On the other side, अगर एक और पर्सन है जो कि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा लेकिन उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है, तो व्हाट आर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस? कि अगर पे फॉर परफॉर्मेंस नहीं होगा तो डेफिनेटली गुड पीपल दे स्टार्ट क्विटिंग द ऑर्गेनाइजेशन. Poor connections between the individual, their core workers and the supervisors. जो रिलेशनशिप है इंडिविजुअल्स का, को-वर्कर्स का और सुपरवाइजर का, वो बहुत पुअर है. So if there are weak relations of boss and subordinate and colleagues, then of course there are issues and people quit. Poor opportunities for growth and advancement. Of course, ग्रो करने के लिए, अपने कैरियर में ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एडवांसमेंट के लिए यू नीड टू हैव गुड अपॉर्चुनिटीज. लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटीज हैं ही नहीं तो फिर आप क्या करेंगे? गुड पीपल क्विट.
Now talking about hiring the right people, how do you know what the right person looks like? आपको कैसे पता है कि right person जो है वो कैसे लगता है? Let us talk about that. First of all, talking about the typical hiring practices. Failure to detect motivational fit with job. Like for example, hiring में एक सबसे बड़ी मिस्टेक की जाती है कि जो पर्सन जिसने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है उसकी जॉब के साथ जो मोटिवेशनल फिट है उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता कि लाइक फॉर एग्जांपल एक पर्सन का एप्टीट्यूड ही हो रहा है, उसकी थिंकिंग ही हो रहा है, उसका माइंड ही हो रहा है, वो करना ही कुछ और चाह रहा है, लेकिन आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सके एंड इफ यू हायर दैट पर्सन तो ऐसे पर्सन ने आपको बाद में ट्रबल ही देनी है, उसने आपको छोड़ के जाना है और फिर आपके लिए एम्प्लॉय रिटेंशन का एक इशू क्रिएट हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिटेक्ट कि जो मोटिवेशनल फिट एम्प्लॉय की अब जॉब एप्लीकेंट की है कि नहीं. जब जॉब एप्लीकेंट की मोटिवेशनल फिट होगी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, इट्स अ गुड थिंग. लेकिन अगर मोटिवेशनल फिट को आप अगर रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम. एप्लीकेंट्स जो हैं दे एग्जैजरेट टू गेट ए जॉब. अक्सर लोगों को देखा गया कि इंटरव्यू में लोग बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके बताते हैं, लाइक काम उन्होंने इतना सा किया होता है, बताते वो इतना है. सो लोग बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं और अगर उनके एग्जैजरेट होने को अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, अगर आप उसको कैच नहीं कर सकते कि ये पर्सन एग्जैजरेट कर रहा है या रियलिटी बता रहा है, तो व्हेन यू हायर दोज पीपल तो यही लोग जो हैं आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. Most hiring decisions made by intuition during the first few minutes of the interview. Now this is not a good practice कि आप इंटरव्यू के शुरू के चंद मिनट में ही आप अपनी इंट्यूशन की बेसिस पे फैसला कर लें कि किसको आपने हायर करना है और किसको आपने हायर नहीं करना. आई स्ट्रांगली बिलीव कि गिव द जॉब एप्लीकेंट सम टाइम, क्योंकि सम टाइम एम्प्लॉय जॉब एप्लीकेंट आ रहा है, उसने बैठना है, वो मे बी सम टाइम शुरू में लोग 1-2 मिनट तक दे आर नॉट रिलैक्स, क्योंकि सम टाइम कई लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं. सो यू नीड टू गिव देम सम टाइम, यू नो, सम लाइक फ्यू मिनट्स, यू नो, comfort. So after few minutes then you can judge them correctly. अगर शुरू के 1-2 मिनट में आप किसी को जज करने की कोशिश करेंगे तो मे भी हो सकता है कि किसी फोर्स या प्रेशर की वजह से एक टेम्पररी उसका एक इंप्रेशन जो कि बाद में चेंज हो जाए. 2 out of 3 hires 2 out of 3 hires proved to be a bad fit within the first year. Now this is a big number. हम जब देखते हैं कि 3 में से हर 2 हायर्स हैं, हर 3 में से दे प्रूव टू बी अ बैड फिट विद द फर्स्ट ईयर, तो पहले साल में ही आपको पता चल जाता है कि जो पर्सन आपने 3 हायर किए हैं उन 3 में से 2 पर्सन जो हैं दे आर नॉट गुड परफॉर्मर्स. मोस्ट इंटरव्यूअर्स नॉट प्रॉपरली ट्रेन्ड. देयर इज also responsibility on the shoulders of interviewers as well, because they are not properly trained. Excellent employees placed in the wrong jobs grow frustrated when unable to utilize their strengths. Now अगर एक person है जिसकी most जो competent है वो for example human resource management skills में है, अब जो लोग HR skills हैं जिसकी बहुत strong, जो HRM के अंदर बहुत strong है, उस पर्सन को जब आप फाइनेंस में, IT में, मार्केटिंग में लगा देते हैं तो डेफिनेटली उस पर्सन को बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है जब उसकी बेस्ट स्किल्स को यूज ही नहीं किया जा रहा. तो देन दीज पीपल क्विट. नाउ टॉकिंग अबाउट द रीजंस व्हाई एन एम्प्लॉय लीव्स एन ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज मॉनिटरी फैक्टर. People want to live and remain with the organization, and people want to leave the organization based on the rewards. Now if the rewards are good, employees they want to stay with the organization, and if the rewards are poor or if there are no rewards, people want to leave the organization. Lack of good working conditions. Of course working conditions का supportive होना बहुत जरूरी है,
नो फ्लेक्सिबल वर्क स्केड्यूल्स। अगर फ्लेक्सिबल वर्क स्केड्यूल नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है एम्प्लॉयज को रिटेन करना, क्योंकि लाइक फॉर एग्जांपल मोस्ट एडवांस कंट्रीज की जब हम बात करते हैं तो वहां 3-3 शिफ्ट्स हैं 8-8 घंटे की। सो एम्प्लॉयज दे सिलेक्ट द टाइम स्केड्यूल एज पर देयर एप्टीट्यूड। So some people they love to work in the morning, some people they love to work in the evening, and some people they love to work during night time. So if there are flexible work schedules, then there are more chances that you are able to retain the best employees. But if there are no flexible work schedules, people leave the organization. Now talking further about the reasons why an employee leaves an organization, lack of respect. Now if there is a lack of respect, like for example employees को जो है प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, उनकी डिसरिस्पेक्ट की जाती है, उनकी लाइक फॉर एग्जांपल पर्सनल अटैक्स किए जाते हैं या बाइसनेस होती है। सो जब एक एम्प्लॉय की डिग्निटी को नहीं देखा जाएगा, उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, तो देयर आर मोर चांसेस कि एम्प्लॉयज विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन। Very few supportive colleagues. This is another major finding that किसी भी organization में बहुत कम लोग होते हैं जो highly supportive हैं। ज़्यादातर वो लोग होते हैं who are not supportive। तो जो बहुत कम तादाद है supportive colleagues की, उसकी वजह से employees they want to quit the organization. Organization is more concerned toward business. या simple is that कि ऑर्गेनाइजेशन इज मोर इंटरेस्टेड इन नंबर्स कि लाइक फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नंबर 1 आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया, एम्प्लॉय नंबर 2 आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया, एम्प्लॉय नंबर 3 आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया। सो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन इज मोर कंसर्न्ड अबाउट द बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन इज मोर कंसर्न्ड अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी। सो किसने कितना अर्न किया, किसने कितना बिजनेस किया, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट डूइंग लाइक दिस थिंग, people start leaving that organization. So increase in favoritisms. Like for example, this is a common practice in Pakistan, particularly in the public sector of Pakistan, that there is a lot of favoritism. There is leg pulling on the one side, and the other side there is a lot of liking and disliking. So in case of favoritism, what happens that एम्प्लॉइज ऑन मेरिट बेसिस उनके राइट को जब किसी और को दे दिया जाता है, उनके अवार्ड को किसी और को दे दिया जाता है, उनके बेनिफिट को किसी और को दे दिया जाता है, तो डेफिनेटली दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। टॉकिंग फर्दर रीजंस व्हाई एन एम्प्लॉय लीव्स एन ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय नीड्स प्राइड इन वेयर दे वर्क एंड व्हाट दे डू। Now this is really very important कि एम्प्लॉय चाहता है कि जहां पे वो काम करे और जो भी वो काम करे उसके अंदर एक फख्र फील करे। लैक ऑफ एप्रिसिएशन, एम्प्लॉय जो है उसको एप्रिसिएशन नहीं मिल रही। Now appreciation is called a non-financial reward, and according to research, in the long run, non-financial rewards are more important than financial rewards. So जहां पे अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, या फॉर एग्जाम्पल देयर इज लैक ऑफ अप्रिसिएशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, आप कुछ भी कर लें, आप बड़े से बड़ी अचीवमेंट कर लें, लेकिन अगर आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, सो यू विल स्टार्ट लीविंग दैट ऑर्गेनाइजेशन। लैक ऑफ चैलेंजेस इन जॉब, अगर जॉब बहुत बोरिंग है, लाइक फॉर एग्जाम्पल सेम एक्टिविटीज आपने बार बार करनी है, तो पीपल गेट इरिटेटेड, दे गेट बोर्ड and they want to switch to any other organization जहां पे बहुत challenging environment हो, क्योंकि जब तक challenging environment नहीं होगा, learning कहां से होगी। The job or workplace was not as expected. Another very simple finding is why an employee leaves an organization is कि जो job या workplace है वो उस तरह का नहीं है जो आप expect कर रहे थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप तो कुछ और ही सोच के इस ऑर्गेनाइजेशन में आए थे, लेकिन जब आप आए और आप बैठे तो आपको पता चला कि भाई दूर के ढोल सुहाने, आप तो समझ रहे थे कि यहाँ पे आपको सिर्फ फैसिलिटीज मिलेंगी और काम इतना नहीं है, लेकिन यहाँ आके पता चला कि फैसिलिटीज तो इतनी नहीं है लेकिन काम बहुत ज्यादा है। Now talking further about reasons why an employee leaves an organization is
the mismatch between the job and person. जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हैं, पर्सन की क्वालिफिकेशंस और हैं. जब मिसमैच होगा तो ऑफ कोर्स पीपल लीव एन ऑर्गेनाइजेशन. टू लिटिल कोचिंग एंड फीडबैक, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कोचिंग और फीडबैक मैकेनिज्म शुड बी देयर. अगर कोचिंग नहीं है, फीडबैक नहीं है, तो एम्प्लॉइज दे ऑफ कोर्स गो इन हाई स्ट्रेस. लैक ऑफ सपोर्ट. सपोर्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी आपका सुपरवाइजर है, आपका बॉस है, आपका हेड है, सो उसके पीछे भी एक सपोर्ट होनी चाहिए कि जो भी डिसीजंस वो करे उनको इंप्लीमेंट करवा सके वो, और जिन एम्प्लॉइज को वो रिवॉर्ड देना चाहे उनको वो रिवॉर्ड दे. लेकिन इफ देयर इज लैक ऑफ सपोर्ट तो डेफिनेटली एम्प्लॉइज लीव एन ऑर्गेनाइजेशन. फर्दर टॉकिंग अबाउट रीजंस व्हाई एम्प्लॉइज लीव एन ऑर्गेनाइजेशन आर stress from overwork and work life imbalance. This is really very important. एक तो ओवरवर्क होता है आपका कि लाइक फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज को इतना ज्यादा काम दे दिया गया कि और उनका जो काम का और जो उनकी फैमिली लाइफ का जो बैलेंस है वो खत्म हो गया. लाइक एम्प्लॉइज दे आर गिविंग मोर टाइम टू देयर ऑफिसेज एज कंपेयर टू देयर होम्स. वो अपनी फैमिली को, बच्चों को, अपने डिपेंडेंट्स को, पेरेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं एंड दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन परफॉर्मिंग द ऑफिस वर्क, और वो भी लेट सिटिंग आप रूटीन में अगर कर रहे हैं. तो अगर आप लेट सिटिंग रूटीन में कर रहे हैं, आप अपने घर को, अपने डिपेंडेंट्स को, अपने पेरेंट्स को, स्पाउस को अपना प्रॉपर टाइमिंग नहीं दे रहे, और ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप अपने ऑफिस में ही रहते हैं, सो दैट इज अनदर रीजन के एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं. लॉस ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन सीनियर लीडर्स. नाउ ट्रस्ट मीन्स आई नो इन एडवांस व्हाट यू विल डू. So employees, when they have no trust or when they lose their trust and confidence in senior leaders, और confidence lose आप कैसे करेंगे जब वो senior leaders बात कुछ करते हैं और अमल कुछ और करते हैं. So जब उनके कोलोफेल में तजाद होगा लीडर्स के, तो definitely employees they start losing their trust and confidence in senior leaders and they start thinking about leaving the organization. Less frequency in giving rewards. Now rewards जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में हैं, लेकिन उसको जो देने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत स्लो है. लाइक फॉर एग्जांपल जहां 5-7 सालों में आपको एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए था, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड आपको मिलना चाहिए था, लेकिन 10-15 साल गुजरने के बावजूद भी अगर आपको वो रिवॉर्ड नहीं मिला, so that is not good for the employee, because the side effect is employees leaves an organization. Key finding is money may attract people to the front door, but something else is needed to keep them from going out the back. Okay, employees को attract करने के लिए money is really very important. लेकिन समथिंग एल्स इज नीडेड टू कीप देम फ्रॉम गोइंग आउट द बैक. लेकिन पैसे के अलावा देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकती हैं उसको रिटेन करने में ऑर्गेनाइजेशन को. नाउ दीज आर द मेजर रिकमेंडेशंस, एम्प्लॉय रिटेंशन recommendations. So somebody asked me how to retain the best employees. So these are the 5 major recommendations starting from compensation. I've given these recommendations in random order. Now compensation means that your financial and non-financial rewards. कि आप अपने employees को financial and non-financial rewards देंगे, so they become more loyal with the organization and they do not want to leave the organization. क्योंकि आपका competitor उनको क्या दे सकता है? Better than you. So why not you do something before your competitor do something better than you? Environment. Positive environment is required. And then growth. Employees prefer those organizations whenever there is a growth opportunity. ये ना हो कि कोई growth opportunity हो ही ना. So employees, they feel more proud and they feel more honored and they feel more motivated and they become more loyal with the organization
when they know that there are career development and career growth opportunities in the same organization, so they do not think about leaving the organization. On the other side, they want to remain, they want to stay with the same organization. Now talking about the relationship. Relationship is really the key area, because I always say one thing: where are the real meanings of words? The real meanings of words are not in words, the real meanings of words are in the people. The real meanings of words are in the relationships. So what happens that when employees, they have good relationships with their colleagues, with their juniors and seniors, with their bosses, with their leaders, they want to stay with the same organization. They do not want to leave the organization. But what happens that if there is poor relationship of employees with other employees and employees and organization, if there is a poor relationship, employees, they start thinking about leaving the organization. And finally, support. Now the top management should support best performance. So employees whose performance is better than others, he or she should get the maximum support from the top management. And if you are not getting the appropriate support from the top management, of course the result is people start thinking about leaving the organization. So overall इस slide में हमने 5 factors discuss किए, and all of these 5 factors are equally important. So as a leader, if you act upon all of these areas like compensation, environment, growth, relationships and support, what happens that it becomes really easy for you to retain your best employees. Otherwise, if you have a problem with the compensation policies, if you have a problem with the external internal environment, if there are no growth opportunities, or if there is lack of support, and if there are bad relationships at workplace among the employees, there are more chances that employees may leave the organization. So आज हमने बात की कि the key responsibility of leaders in human resource retention. Now retention is really very important, because when we hire people, we want to keep those people, because we train those people, हमने investment की हुई है. Now how this is possible कि आप employees को hire करें, hire करने के बाद आप उनको train करें, they get experience, और जब वो अपना best output देना जो ही शुरू करें, they leave your organization. So this phenomena can damage the repute of your organization, and you have big problems with like improving your efficiency and effectiveness. So I hope that with the help of today's lecture, you have learned a lot about leaders' key responsibility in human resource retention. Inshallah, see you all in the next lecture. Khuda Hafiz.